वेलकम टू मोस्टली मॉम। वी आर एडमिस्ट ऑफ द बेबी लेड वीनिंग सीरीज, जहाँ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अबाउट बेसिक्स, फूड एलर्जेंस एंड व्हाट नॉट। आई विल लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड इन फैक्ट इन द आई बटन अबव। यू कैन गो एंड हैव अ लुक। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फूड विद रिस्पेक्ट टू बेबी लेड वीनिंग। अगर आप बेबी लेड वीनिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैं आपको सारी कैटेगरीज ऑफ फूड आइटम्स के बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे उनको इंट्रोड्यूस करना है, व्हाट इज़ द प्रोग्रेशन चार्ट एंड हाउ टू कट सो दैट चाइल्ड कैन एक्सेप्ट द फूड ईजिली। सो क्विकली लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम चलते हैं 3 qualities of food that you need to check when you are giving to the baby. Number 1 is the size of the food item. The size of the food item should be more than this index finger of yours, so that they have the extra gripping part as well as something to eat. उनके हाथ बहुत छोटे होते हैं, so they need this much area to grip it and this much to eat in their mouth. So you need to see that you will be giving finger foods to them which are bigger the size of your index finger. Number 2 is the bigger the better. That means make sure that you do not give them bite size food because it has a choking or a gagging hazard. आपको उनको बड़े फूड ही देने हैं बिकॉज उससे वो बड़े फूड अपने माउथ में खेल कर छोड़ देंगे, थोड़ा खा लेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, बट छोटे फूड दे डू नॉट, द टंग डू नॉट हैव दैट डेक्सटेरिटी, दे माइट gulp the food which might get into their neck. So bigger the better. And the third is anything that you can squish between your 2 fingers is the right texture to give. That means अगर कोई भी चीज़, फॉर एग्जाम्पल एप्पल है, you cannot squish it between your फिंगर्स. दैट मीन्स कि बच्चा भी उसको च्यू नहीं कर पाएगा. आप उसे हल्का सा पार बॉयल कर दीजिए, एटलीस्ट आपका फोक इजीली चला जाएगा, आप इन दोनों फिंगर्स के बीच में उसे दबाकर उसका जूस निकाल पाएँ. दैट इज़ द राइट टेक्सचर टू गिव टू योर बेबी. एनीथिंग हार्डर is more difficult and anything softer is even difficult because then it will just become a puree in their hands. So you have to keep a check with respect to these things. And now let's start with our food guide. Number 1 is hard and long food items. For example, pear, apple, potato. So everything, you have a potato of this size, you have a pear of this size, you have an apple of this size. So you have to cut them in slices like this. You can parboil or steam them and then give it to the child. So it will be really easy for them to hold it. इस वाली कैटेगरी में आपके कैरेट्स, फ्लोरेट्स जैसे कि ब्रोकली, कॉलीफ्लावर भी आते हैं. अगेन कॉलीफ्लावर भी आपको इतना बड़ा फ्लोरेट इजीली मिल जाता है. सो यू हैव टू जस्ट प्लग द फ्लोरेट, steam it and give it to the baby. Similar is the case with broccoli. You have to pluck the floret, cut it into this size and give it to the child, but you have to parboil it because they are little harder to chew for the gums of the baby. I have already told you about the size, I have already told you about the texture. और लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोग्रेशन चार्ट की, so yes, carrots, cauliflowers, broccoli are very good to introduce your child at the age of 6 months or in fact at the beginning of starting the baby led weaning because they're easy to handle. The second food item on my list are small fruits. For example, grapes, strawberries, blueberries, tomato, like cherry tomatoes. So they are all small and they are round in shape. You have to make sure that you do not give anything round because round is really easy to swallow. तो हो सकता है कि उनके नेक में जाकर फंस जाए. आपको चेरी टोमेटोज अगर आपको देने हैं, सो यू हैव टू कट देम इनटू 4 पीसेस. दैट मीन्स उनके एजेस शार्प करने हैं और फिर आपको बच्चे को देने हैं. सिमिलर विद रिस्पेक्ट टू ग्रेप, विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉबेरीज. हाउएवर अगर आपको कोई स्ट्रॉबेरी बड़ी वाली दिख जाती है, यू कैन गिव द कंप्लीट फ्रूट टू द चाइल्ड. हाउएवर अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा राउंड है, so you have to cut it into pieces. Again, try give the finger size if you have a bigger strawberry, but because grapes or blueberries inherently small होते हैं, so we avoid introducing them at the age of 6 months. Please provide them at the age of 7 to 8 months when your child already has an experience of over 1 to 2 months of putting the food in the mouth. So only then you introduce these small items. Number 3 on my list is sticky and soft things like idli, egg, cooked chicken. In fact, dates are very good when you give it to the child. However, आपको इनको यही करना है. First thing, anything like chicken or egg should be really well boiled because it can create a hazard and in fact infections if the
egg or chicken are underboiled. Apart from that, आप इनिशियली अगर आपको एग इंट्रोड्यूस करना है, आप उसे बॉईल कीजिए, आप उसे कट कीजिए 4 पीसेज में. अगेन मेक श्योर दैट योर egg piece, if your egg is like this, you have to cut in the vertical manner and give it to the child. They will be able to have it. Similarly with idli, you can actually cut the idli into 4 pieces, give the bigger piece to them, and they will be able to have it. For cheese and cooked chicken, you can actually shred it, make it into a ball and give it. अगर आपका बच्चा 8 से 9 महीने का है और उसे एक्सपीरियंस है, यू कैन इनफैक्ट श्रेड इट एंड पुट इट ऑन द टेबल. Fourth on my list is breads and rotis. Bread को toast किया, I cut it into 4 pieces and the center piece is given to the child. Initially for first, when you're introducing, you can give the raw bread like this only, and then probably once your child is a pro, then you can probably put some butter or peanut butter or ghee and give it to the child. Similar is the case with roti. You have to just roll it up और आप उसके नीचे एल्यूमिनियम फॉयल लगा दीजिए एंड गिव इट टू द चाइल्ड, एंड ट्रस्ट मी योर चाइल्ड विल जस्ट लव इट. बहुत सारी मदर्स को ये इशू होता है कि सूखी रोटी बच्चा कैसे खाएगा. आप उनके आटे में पोटैटो, बीटरूट या कोई भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, पालक, मेथी, कुछ भी डालकर, थोड़ा सा सॉल्ट डालकर, और आप अपने बच्चे को रोटी खिलाइए एंड यू विल सी दैट योर चाइल्ड विल लव this roti, uttapam, in fact dosa. Now the next on my list are really teeny tiny and different shaped foods. फॉर एग्जाम्पल मुरमुरा. हम लोगों को पफ्ड राइस बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट बच्चों को भी बहुत पसंद आता है, बट आई वुड रियली सजेस्ट दैट यू डू नॉट गिव दिस थिंग to your child when the child is 6 months or you are introducing baby led weaning. At least a child should be 9 to 12 months, because they do not have that pinching power and hold the stuff and put in their mouth. So generally जब बच्चे 6 महीने के होते हैं, they use their palm to hold stuff and take it in their mouth. So do not give all these very small items, because neither their mouth can manage the small items, they will immediately gulp it and it might get stuck in their neck, and neither they can hold it with their hands and put it in their mouth. So more or less it will just go waste. So अगर आपको बहुत सारी छोटी चीज़ें जैसे peas, corns या मुरमुरे इस टाइप की चीज़ देनी है, please wait for a while, introduce them by the age of 9 months at least. So guys, that's all for today. I hope मैंने आपकी सारी queries solve कर दी हैं with respect to how to introduce food to the children. I have already given you the qualities, but just in case you're looking for के exactly मैंने क्या tools use किए for baby led weaning, do follow my Friday consultancy video and do make sure that you stay here, subscribed, and in fact follow my Instagram. So till next video, stay safe and stay subscribed. Bye bye.